YouTube Live. I'm your host, Dr. Mohan, and we are going to start a few topics for the rapid revision. And based on these topics, daily diamond MCQs will be posted. So, if you are going to listen it carefully, you will be actually getting some advantage while visiting our Telegram channel for the daily diamond MCQs. So, if you do visit our Telegram channel regularly, its name is Quick Dental. So there are a lot of Telegram live recorded sessions present there. Okay. So today we thought it would be a good idea to start again that Telegram live session. So what we covered early in the morning, but at our Telegram channel, so we covered anatomy, in which we studied small intestine, its different part, and what is the role of their different parts. So kindly do check that as well. That will be available on our Spotify channel as well till evening. So next topic we were about to cover trachea, but just because due to some technical errors, we were not able to continue that on Telegram channel. But right now we are live again. So trachea, that is also known as windpipe. So what is the structure of it? What is the function of it? And again there was some technical issues. Sorry for the interruption. So it's a vital part of the respiratory system, that is trachea. It allows air to travel from the larynx to the lung. So it's a tube like structure made up of cartilage and soft tissues. So it ensures both flexibility and stability also. What is like a structure and what are the functions? So locate. So it extends from the larynx, that is voice box, at the level of C6 vertebra down to the T4 to T5 vertebral level. So ट्रकिया एक्सटेंड होता है लैरिंग से उसकी C6 वर्टिब्रा और T4 या T5 के वर्टिब्रल लेवल तक वो एक्सटेंड होती है, where it divides into the left and right bronchi. So bifurcation at the carina occurs at the T4 T5 vertebral level. Okay. So what is the structure of the trachea? So it is approximately 10 to 12 centimeter long and almost 2 to 2.5 centimeter wide. And it is composed of 16 to 20 C-shaped cartilages in the form of rings, okay, which collapse during the breathing. So open is at the posterior side facing the esophagus, so allowing फूड टू पास स्मूथली. तो पोस्टीरियर पार्ट पे थोड़ी सी रिंग जो होती है वो ओपन होती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट खाना जो है इसोफेगस से नीचे अच्छी तरह से फ्लो हो सकता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई हार्ड कार्टिलेजिनस रिंग जैसे एंटेरियर और लैटर साइड में है वैसी नहीं होती. So trachealis muscle at the back of the trachea, it allows flexibility during the swallowing and even coughing as well. So that was the structure. So functions, basically it provides the air between upper airway and the lungs. एंड फिल्ट्रेशन भी होता है इसकी वजह से, प्रोटेक्शन भी होता है. हाउ? सो इट इज लाइन विद द सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड columnar epithelium. Again breathing, it is aligned by the columnar epithelium, which contains mucus secreting goblet cells that trap dust, pathogen and even debris. So this cilia move mucus upward toward the throat for the removal. जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे उस पर स्टिक हो जाता है तो बेसिकली म्यूकस जो होता है उसकी मूवमेंट अपवर्ड टुवर्ड्स द थ्रोट होती है, जिसको हम खांसी या कफ कहते हैं. ओके.
वो लाइंड होती है सिलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम से. ओके. So it also maintains the temperature and the humidity. So it moistens and warms incoming air before it reaches the lungs. Okay. And cough reflex, जैसे मैंने कहा कि the presence of irritants or even like triggers cough foreign materials, foreign particles. And clinical significance, tracheitis होता है, inflammation of the trachea. It is often due to infections. Tracheal stenosis can be there, that is narrowing of the trachea, leading to the breathing difficulties. And tracheostomy is important as or general surgery में basically. So it is a surgical procedure to create an opening in the trachea to assist breathing in the emergencies. Okay. Sometimes like objects accidentally inhaled can get lodged in the trachea, so it can require immediate medical attention. Okay. On these topics, MCQs will be posted on the Telegram channel as a Daily Diamond MCQ. Every hour you have got a question to answer. सो आफ्टर दैट स्पेशल सेंसेस की टूवर्ड बढ़ते हैं. फिजियोलॉजी एनाटॉमी का दिन है आज शायद प्रोबेबली. सो मिडल ईयर एनाटॉमी. सो मिडल ईयर इज अ स्मॉल एयर filled chamber located between the outer and the inner ear. Okay. So it plays, middle ear plays a crucial role in sound transmission and also प्रेशर इक्वलाइजेशन. सो दो फंक्शन है इसके, साउंड भी ट्रांसमिट करता है और इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर भी होती है मिडल ईयर से. सो इट कंटेन्स द ऑडिटरी ऑसिकल्स, दैट इज स्मॉल बोन्स दैट एम्पलीफाई द साउंड वाइब्रेशंस एंड ऑल्सो ट्रांसमिट देम टू द इनर ईयर. ओके. अगेन जैसे हमने उसका देखा है लोकेशन स्ट्रक्चर फंक्शन, वैसा इसका भी देख लेते हैं. सो द मिडल ईयर इज सिचुएटेड विद इन द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल and it is separated from the outer ear by the tympanic membrane, that is eardrum, and from the inner ear by the oval window and the round window. तो आउटर ईयर है बेसिकली, बीच में टिम्पेनिक मेम्बर आ जाएगी, मिडल ईयर आ जाएगा, फिर एक ओवल विंडो आ जाएगी, राउंड विंडो उसके ऑलमोस्ट इनर ईयर आएगी बाद में. ओके. So again I am repeating, it is separated, that is middle ear is separated from the outer ear by the tympanic membrane and from the inner ear by the oval and round window. So it is connected to the nasopharynx via eustachian tube, which helps in maintaining on the both sides of the eardrum. So जैसे हमने कहा कि उसके function basically amplification of sound भी है, along with that pressure equalization भी है. So through the mechanism of eustachian tube that things occur. Okay. Ear pressure equal maintain होता है. So what are the different contents of the middle ear? तो इसमें ऑस्टियोलॉजी में थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं मैलियस इनकल स्टेप्स में, और एनाटॉमी में लाइक ब्रैकियल आर्चेस से जितने भी कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं तो उसमें भी मैलियस इनकल स्टेप्स का क्वेश्चन आ जाता है. सो फिजियो एनाट जैसे कंबाइंड टॉपिक है. सो ऑडिटरी ऑसिकल्स स्मॉलेस्ट बोन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और these three tiny bones amplify and transmit sound vibrations from the tympanic membrane to the inner ear. So malleus, also known as hammer, it is attached to the eardrum which transmits the vibration. Incus, also known as anvil, which bridges the malleus and the steps. And steps, that is stirrup, the smallest bone in the human body which connects the oval window, transferring vibrations to the inner ear. Okay. Malleus, incus, steps, hammer, anvil and stirrup. So middle ear muscles are also there along with bones. So tensor tympani muscles which attaches to the malleus, which helps to dampen the loud sounds like chewing ke time pe. Okay. So tensor tympani muscle, which is a middle ear muscle, it attaches to the malleus and it also helps in dampening the loud sounds. While stapedius muscle is also there. So it attaches to the steps and it prevents excessive ear from the loud noises. तो स्टेपेडियल जो होती है वो स्टेप्स को अटैच होती है
और एक्सेसिव मूवमेंट प्रिवेंट करती है, वाइल टेंसर टिम्पैनी मसल जो है मैलियस को अटैच होती है, वो डैम्प करती है, लो करती है साउंड्स, लाउड साउंड्स. आफ्टर दैट यूस्टेशियन ट्यूब जैसे देखा कि इट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू द नेजोफैरिंग्स. इट ऑल्सो हेल्प्स टू ड्रेन फ्लूइड एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस एज वेल. ओपनिंग्स होती है बट उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे. Eustachian tube dysfunction sometimes can lead to the ear pain, pressure and imbalance as well, और hearing issues भी होते हैं. और barotrauma, which is nothing but pressure balance in the middle ear due to the rapid altitude changes, जैसे while flying या diving होती है. और otitis media, it is a middle ear infection. It is common in children just because it is shorter and horizontal होती है eustachian tube. That's why otitis media is most commonly seen in the children. हॉरिजॉन्टल स्टेजियन ट्यूब होती है, दैट्स वाई. एंड शायद कॉकलिया जो है सेम वो चीज़ हम कवर करेंगे. सो इट्स ऑल्सो लाइक अ स्पेशल सेंस, फिजियो से आ जाता है ये. सो द कॉकलिया इज अ स्पायरल शेप्ड फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर in the inner ear, okay, uh, responsible for the converting sound vibrations into nerve impulses. So it plays a crucial role in hearing by transforming mechanical sound waves into the electrical signals that can brain interpret. Okay. So location जैसे ट्रकिया का हमने देखा था. ओके. मिडल ईयर जो देखा था वो. एंड आफ्टर दैट इट्स कॉकलिया. So cochlea is a part of the inner ear and is housed within the temporal bone. Cochlea जो होता है. So it's a snell-like coiled shape and makes almost 2.5 turns around the central axis called as modiolus. So it contains three main chambers, that is upper chamber, lower chamber और बीच में होता है cochlear duct. So upper chamber also known as scala vestibuli contains perilymph and it begins at the oval window. While जो cochlear duct होती है scala media also known as it contains endolymph and houses the organ of Corti, which is the main sensory organ of the hearing. So cochlear duct और scala media जो होता है उसमें endolymph होता है और उसमें ही organ of Corti होती है. Then lower chamber scala tympani which contains again perilymph and ends at the round window. So perilymph, endolymph, perilymph. Okay. Upper chamber, lower chamber, बीच में cochlear duct. Okay. So again basilar membrane होती है which separates the scala media from the scala tympani. यानी बीच कॉकलियर डक्ट और लोअर चैम्बर को डिस्कनेक्ट करती है, वो सेपरेट करती है. सपोर्ट्स द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो बीच में होता है स्केला मीडिया में, which detects the sound vibration. So primary or sensory organ for hearing is organ of Corti based located in the basilar membrane. It also contains hair cells, that is sensory receptors cells that convert sound waves into electrical signals. Cells जो होते हैं basically they are responsible for hearing, while जो outer hair cells होते हैं they amplify the sound. Organ of Corti में. Or tectorial membrane is also there, which overlies the organ of Corti, and when sound waves cause the basilar membrane to move, it stimulates the hair cells leading to the nerve impulses. Frequency sounds होते हैं they vibrate at the base of cochlea, while low frequency sounds they vibrate at the apex of the cochlea. Okay. और hair cells जो होते हैं bend and it can trigger the nerve impulses in the cochlear nerve, a branch of the vestibulocochlear nerve, that is cranial nerve number 8. और ये सिग्नल ब्रेन जो है वो इंटरप्रिट कर सकता है. तो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स अगेन एमसीक्यूज विल बी देयर. एंड आफ्टरनून शायद वी आर गोइंग टू कवर विजुअल साइकिल, उसमें कोन सेल, रॉड सेल्स, बाकी की चीज़ें हम कवर करने वाले हैं और एमसीक्यूज भी इस पर पोस्ट होने वाले हैं. आई एम अगेन सेइंग कि सिंस 1st of April वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग. So stay tuned. See you soon. Goodbye.